So here, the fruit seller has a total 187 fruits consisting apple, mango, oranges. The number of apples and mangoes are in ratio 5:2. After she sells 75 apples, 26 mangoes, and half of the oranges, the ratio of the number of unsold apple to the number of unsold oranges become 3:2. The total number of unsold fruit is to be find out. Okay. So apple, mango, oranges. Initially, the ratio between number of apple and mango is 5:2. So let us take it 5x, 2x. So remaining 187 minus 5 plus 2, 7x is number of oranges. Unsold apples, so 5x minus 75 apple over half of the oranges sold. So half of the oranges with unsold means 187 minus 7x by 2. This ratio is equal to 3 upon. So finally it is 4, 2 into this 4, 5x minus 75 and 3 into 187 minus 7x. This is 20x minus 300. This is 3 7 are 21, 318, 54 plus 2, 5, 6, 1 minus 21x. 20 minus 21, it is 41x. And 3, that is 861. So x is 861, 41, 42 to 800. This is this. Okay. So it is 21. So the total number of unsold fruits. So mango, initially it was 5 into 21, sold 75. Okay. So 105 minus 30 left. Left mangoes. And no, it was apple. Then mango 2 into 21 minus 26. So 42 minus 26 is 16. And finally, oranges. It was 187 minus 7 into 21 minus. So it is half. Half of source left is half. This is 187 minus 7. 1 is 7, 7 to 140. 147. 187 minus 147. 40. 40 by 2 means 20. So 30, 16 plus 20 added the total number of fruits 66. This is your answer. So it is a simple question, not a very difficult one. Now, second question. A glass is filled with milk, two-thirds of its content is poured out and replaced with water. If this process of pouring out two-thirds of the content and replacing with water is repeated 3 more times, okay, 3 more times, then the final ratio of milk to water in the glass. So it is a very simple questions from your concept classes. Like initially, it was full of milk and two-thirds of its content is poured out and replaced with water, and this process repeated 4 times. Okay, and finally, the quantity of milk is
left after 4 operation is this. So if it is left and it is original one, then there is a formula. Left upon original is equal to, if it was A and this poured out quantity is B. So A minus B upon A to the power n. Left quantity of the milk to the original quantity of the milk ratio A minus B upon A. It is a very simple formula from your concept classes. So no more discussion is required. Yes, to do this question faster, better you take A is equal to 30 liter. So B 2/3 means B is equal to 2/3 means it is 20 liter. So now put in a formula left upon original 30 minus 20 upon 30. This process repeated 4 times. So 10 3 is 30. This is 1 upon 81 left upon original. So if original quantity of milk was 81 and left is 1, it means original milk was 81, left is 1, means 80 liter water is there in final mixture. So question was find the ratio of milk, find the ratio of milk after pour operation. Left milk is 1 and the water is 80 because 81 liter milk now left with only 1 liter. So it is replaced by 80 liter water. So a very simple question and answer is milk to water is 1 upon 81. Answer is 1 is to 80. If a plus b root n is a positive square root of 29 minus 12 root 5, where a and b are integer and h a natural number, then the maximum possible value of a plus b plus n is to be found out. So it is a plus b's root n is square root of 29 minus 12 root 5. Okay. So it is 29. 2 into 6 root 5. 6 you can take inside 5, 6 into 6, right? So it is 36 5. Okay, 5 into 2 into 3, 2 into 3. So this is 2, 2, 4, 4, 5, 20, and 3, 3 is a 9, right? 5 to the 10, 10 to the 20, and 3, 3 is a 9, 20 plus 9, 29. So now everything is simple. You can take it 20 plus 9. So basically it is square of root 20 and square of 3. Correct? 5 plus 6 into 6. So it is root 20 minus 3 square to the power 1 by 2. This is a plus b root n plus minus. But you have to take in only positive square root. You have to take only positive square root. So it means a plus b root n is equal to 20 minus is root 20 minus 3. Correct.
I think this process is clear, you know. Now, if I compare it, is minus 3 and b is b root n. B root n is equal to root 20. You can write this 5 into 4 means 2 root 5. Okay, so in this condition, b is going to be 2 and n is going to 5. Then a plus b plus n will be a is minus 3, b is 2 plus 5. This is 4. But wait, it is given the maximum possible value, correct? So for this, if I take b root n is equal to root 20 into 1, then in this scenario, b is 1 and n is 20. So now a plus b plus n, a is minus 3, b is 1 and n is 20. So this time 21 minus 3, 18. So a plus b plus n is 18, which is bigger than this. So this is not your possibility. Answer is 18. Simple algebra question. Now this is question number 4. In September, the incomes of Kamal, Amal, and Vimal are in ratio 8 is to 6 is to 5. They rent a house together, and Kamal pays 15%, Amal pays 21%, Vimal pays 18% of their respective incomes to cover the total house rent in that month. Okay. In October, the house rent remains unchanged while their incomes increases by 10%, 12%, and 15% respectively. So in October, the percentage of their total income that will be paid as house rent is nearest. Okay. So here, Kamal, Amal, Vimal. The ratio is given 8 is to 6 is to 5. So suppose Kamal income is 8x, and Amal is 6x, and Vimal is 5x. So Kamal pays 15% of the income. So 8x, 15%. And Amal, 12% of his income is 12% of 6x. And Vimal pay 18% of his income 5x. So this is the total rate in month of September. So here this is 8 into 15 and x by 100 you can take common plus 12 into 6. And I can write directly. Okay. 15 8 ja 120. 6 12 72 and here 120. So 120 120 240 240 plus is 300 12x of 100. It is a total rate.
Okay. Now, I think it is clear. 8x, 15, 15 is 120. 6 into 12, 72. And finally, 18 5s. Okay, this is problem. It is 90. Sorry, sorry, sorry. It is 90. 18 5s, 90. So this total 120, 1702, 2 and 279918 and 112, 282 x of 100. This is total rate. Now, in October, the house rent remain unchanged. So in October, rent will remain same 282 by 100x, while their income increases by 10%, 12%, 15%. So now the new income of Amal will be 8x, 110% of 8x, and here 112% of 6x, and here 118% of 115% of 5x. So it is their total income. So their total income is this x by 100 and inside 8 into 110, 6 into 112, and this is 5 into 115. So out of this total income, total new income, the rent is going same in month of October as it was in September. So the question was the percentage of their total income that will be paid as a house rate is nearest, that means 282x 100. Out of this x 100, 8, this 80, this is 72, and this is 5 and 575 into 100. Okay, this x 100 cancel, and now it is 282, add it 0, 2, 257, 8, 8, 7, 15, 15, 7, 22, 2 carry over, 8, 6, 14, 45, 19, 19 plus 2, 2127 into 100. This is your answer. So calculator was there, you can calculate it. Answer is 13.26. Here an amount of rupee 10,000 is deposited in bank A for a certain number of years at a simple interest of 5% per annum. On maturity, the total amount received is deposited in bank B for another 5 years at simple interest of 6% per annum. If the interest received from bank A and bank B in a ratio 10:13, then the investment period in bank A is to be found out. So if bank A, here the deposit amount is rupee 10,000. So interest received from bank A is, it is the simple interest of simple formula SI is equal to PRT by 100. All of you know it. So simple interest from bank A is on principal 10,000 is R is 5% and certain number of years, suppose it is N. So this is the interest received from simple interest received from bank A. Now from bank B, simple interest will be 10,000 rupees. This amount will be deposited in bank B plus this interest.
Okay, this is a principal, and R is 6%, and T is for 5 years. So this simple interest from bank B and this simple interest from bank A. Now simply इनका रेशियो दे रखा है 10:13, तो बस इसका रेशियो फाइंड कर ले। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा जल्दी से। It is this cancel and okay. So this is 510. 510. Okay, right. So here's 500n over 10,000 take common. So 1 plus 5n upon 100 means 100 plus 5n over this 100 into 30 by 100. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And here it is this cancel. And this ratio is actually given equal to 10 by 30. So now 10 1 ja, 10 5 ja. So this is 5n into 13 is equal to 100 plus 5n 3. So this is 65n and this is 300 plus 15n. So 50n is equal to 300. Answer n is 6. So answer is this is right answer. Again, a simple question of SICI concept based. Now take this question number 6. A shop wants to sell a certain quantity of grains. It sell half the quantity and an additional 3 kg of these grains to the first customer. Then it sells half of the remaining quantity and an additional 3 kg of these grains to the second customer. Finally, when the shop sells half of the remaining quantity and an additional 3 kg of these grains to the third customer, there are no grains left. The initial quantity in kg of grain is. Okay, this question is like suppose there is q kg grain in it. So to the first customer, it goes to half of this plus 3 kg more. And now from remaining to second customer will goes to जो क्वांटिटी बची थी उसका हाफ plus 3 kg. And now if remaining quantity is R2, then third customer, this will be remaining quantity का half plus 3 kg. And this time this is 0. ये इसका एक स्ट्रक्चर है मीन्स क्यू के जी क्वांटिटी थी शॉप में तो फर्स्ट कस्टमर को क्यू का हाफ चाहिए गया और 3 kg मोर देन रिमेनिंग क्वांटिटी ये हुई इसका सेकंड कस्टमर को हाफ गया और 3 kg मोर देन रिमेनिंग क्वांटिटी ये बचती है और थर्ड कस्टमर को इस क्वांटिटी का हाफ जाता है और 3 kg मोर और इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है. So it is a very simple question if you do it with the help of choices because none of these is not given. So definitely one एक कोई तो आंसर हो नहीं है ना. और ये क्वेश्चन कैट में बहुत बार आया है तो अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस करी होगी तो मतलब कम से कम 5 6 7 बार ही आ चुका है क्वेश्चन लास्ट 10 to 20 years. So कैसे? If I take 18
इफ आई टेक 18 ईयर्स, 18 kg क्वांटिटी थी शुरुआत में, तो अगर पहले 18 थी तो पहले कस्टमर को 9 गई, हाफ, और 3 और 9 3 12 चली गई, बची कितनी? 6। 6 का हाफ कितना हुआ? 3। 3 + 3 0। 6 हो गया तो ये क्या बचा? 0। तो दो ही कस्टमर में 0 आ गया, तो फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता। सेकंड, अगर आप 50 लेते हो, अगर 50 था तो 50 का हाफ फर्स्ट कस्टमर को 25 गया, +3 kg और चला गया, 28 kg हो गया उसके पास। तो अब बचा कितना? 22 kg। 22 kg में से सेकंड कस्टमर को हाफ 11, और 11 3, 14 kg चला गया, राइट। 14 kg, अगर 22 में से 12 14 चला गया तो कितना बचा? 8। 8 का हाफ कितना होता है? 4। 4 + 3 7। क्या? 8 - 7, अभी भी 1 बच गया, जबकि पहले कस्टमर, दूसरे कस्टमर, तीसरे कस्टमर के पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इफ यू टेक दिस 42, 42 क्वांटिटी, फर्स्ट कस्टमर को 21 + 3, सो 24 kg से लगे, अब कितना बचा? 42 - 24, 12 4 8, और 3 2 1, तो 9। 9 + 3, ये 12 kg चला गया। 18 - 12 कितना बचा? 6। 6 का हाफ कितना हुआ? 3, और 3 + 3, 6 kg चला गया, क्या बचा? 0। यही है राइट चॉइस। ओके, सो इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ब्लेसिंग, एक तरह से ब्लेसिंग थी आपके लिए, यू कैन से इट इज अ सिटर। सो अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोडक्ट इज fixed to ensure 40% profit. If the product had cost 40% less and had been sold for rupees 5 less, then the resulting profit would have been 50%. The original selling price in rupees of the product is to be found out. Okay. So the question is like, suppose this is a cost price. Selling price fixed in such a manner that it generate 40% profit. So it means the selling price +40% profit पे होगी। If the product had cost 40% लेस, तो अगर रिड्यूस्ड कॉस्ट ये 40% लेस हो जाए तो ये रिड्यूस्ड कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, है ना। और 5 रुपये लेस कर दिया जाए सेलिंग प्राइस से, तो ये फाइनल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इस सिनेरियो में यानी रिड्यूस्ड कॉस्ट प्राइस को जब आप इस पुरानी वाली सेलिंग प्राइस से 5 रुपए कम करके बेच रहे हो फाइनल सेलिंग प्राइस पे, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 50% का। आपसे पूछा गया है ये सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसानी से किया जा सकता है। आप इसे एक्स वगैरह एज्यूम करके आप करते होगे, निकल आएगा। लेकिन देखिए, सपोज कॉस्ट इज 100, मैंने एज्यूम कर लिया कि कॉस्ट 100 थी, और 40% प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 1 पॉइंट। इफ द प्रोडक्ट हैड कॉस्ट 40% लेस, तो रिड्यूस्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी? 60 रुपीज। अब इस रिड्यूस्ड कॉस्ट पे अगर आपको 50% का प्रॉफिट चाहिए, तो 60 की चीज यानी 50%, 60 का कितना? 30 होता है, 90 रुपए में बेचना होगा, राइट। तो जो मेरी पुरानी वाली सेलिंग प्राइस थी वो 140 थी, और ये रिड्यूस्ड कॉस्ट पे 50% प्रॉफिट के लिए आप इसे 90 में बेच रहे हो, तो मैंने कितना अमाउंट रिड्यूस किया? वो 140 - 90, 50 रुपीज, राइट। तो अगर समझ रहे ना, मैंने 100 रुपीज को कॉस्ट पे अज्यूम कर लिया था, 40% प्रॉफिट के लिए आपने 140 में इसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करी थी। लेकिन अगर ये 10 40% सस्ती मिलती है ये चीज, ये जो कॉस्ट थी आपकी, तो फिर ये रिड्यूस्ड कॉस्ट प्राइस आपका क्या होता है? 60 का होता है। और इस 60 पे 50% का प्रॉफिट चाहिए रिड्यूस पर, तो 60 का 50% 30 होता है, यानी 90 सेलिंग प्राइस होती है, ये होती है आपकी फाइनल सेलिंग प्राइस।
तो देखिए, एज पर माई एजम्पशन 100 रुपए की सेलिंग प्राइस 140 डिसाइड करी थी, और इस रिड्यूस कॉस्ट पे इस केस में 90 रुपए फाइनल सेलिंग प्राइस, तो मैंने कितना कम किया? 50 रुपए कम किया, बस इसी को काम कर रही हूँ कि ओरिजिनली जो भी सेलिंग प्राइस था और वहां पर अमाउंट आपने 5 रुपए कम किया था, तो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मेरी सेलिंग प्राइस कितनी थी? 140। और मैंने कितना रिड्यूस किया था? 50 रुपए। तो इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए ना, तो 5 10 जा, और दिस इज 40। वेरी सिंपल। तो अगर आपने इस कंसेप्ट पे प्रैक्टिस करी होगी तो ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। Now see this question number 8. For any natural number n, let a n be the largest integer not exceeding root n. Then the value of a1, a2 plus a3 up to a50 find करना है आपको. Like a1, a2, a3, a4, a5, dash, 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 a50. Correct? Like for any natural number a, like a1, a n be the largest integer not exceeding root n. तो root वन क्या होगा? वन होगा, मीन्स ए वन इज ये होना चाहिए. करेक्ट. लाइक ए टू इज लार्जेस्ट इंटीजर. तो रूट टू का इंटीजर क्या होता है? रूट टू अगर आप फाइंड करें तो वन पॉइंट समथिंग निकलता है, मीन्स ए टू वैल्यू क्या होगी? वन. जीआईएफ के क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान हो तो. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स ए वन इज रूट वन, सो ए वन इज गोइंग टू वन. ए टू, ए टू इज be the largest integer not exceeding root 2. So root 2 is what? It is a 1.41 something, you know. So largest integer is left side of it. A2 is 1. Similarly, A3 is also 1. But A4 means it is 2. So A4 is going to 2. Means A1, A2, A3, 1, 1, 1. A4 is 2. A5 is 2, is up to A6, A7, A8, 2, 2, 2, right? Because A9 is what? A9 is root of 9. It is 3. So A9 is going to be 3. But before it, so these 3 1, count it. These are 3. And 1, 2, 3, 4, 5. So I think it is very simple if you count it. 113, A9, 3, up to A15, it will remain 3, 3, 3, 3, 3. So 9 to 15, 7 values. From A16 to A24, A16 to A24. A16 is 4. So A17 is 4, right? A18, A19, A24 तक सब 4 आएगा, right? Because A25 5 हो जाएगा. So 3, 8 minus 3, 5. Then 16 minus 9, 7. Here 16 minus 9, 7. Then 25 minus 7. Sorry, 9. 25 minus 60, 9. Similarly, it is a
like AP 3, 5, 7, 9, right? So A25 to A35. This is going to, there are 11 numbers with 555 and A36 to A48. 6, 6, 6, 6, 6, 13. And A49 is going to 7 and A50 will also 7. Correct. So if you could realize it, basically it is a question from GIF, greatest integer function, right? So while it is very simple question, if you have done this chapter in your practice, uh, an is the largest integer not exceeding root n, not exceeding root n. समझ रहे हैं ना? A1 तो 1 की n की वैल्यू 1 हो गई, तो रूट n से एक्सीड नहीं करेगा इंटीजर, रूट 1 इज 1 होता है, तो ठीक है, इट इज A1 इज इक्वल टू 1. A2, A2 का मतलब क्या हुआ? ये रूट 2 से एक्सीड नहीं करना चाहिए इंटीजर जो भी होगा, तो रूट टू 1.414 होता है, रूट टू इंटीजर क्या हुआ 1, तो इसके लिए इसकी वैल्यू 1 होगी. A4 2, समझ गए हैं अगर आप, तो फिर ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए. इस सबका सम चाहिए था, तो 1 1 यानी ये कितने हो गए, 3 1 जा 3, सबका सम चाहिए आपको, प्लस 5 × 2, 7 × 3, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, 3 5 7 क्या हो जाएगा, 9, 9 × 4, 9 × 4 प्लस 11 × 5 प्लस 13 × 6 प्लस 2 7 है, सो 2 × 7 ऐड कर दीजिए, 3, 3 + 10 + 7 3 21, 9 4 जा 36, 11 5 जा 55, 78 and plus 40. तो 3 + 10 13 13 14, ऐड कर दीजिए, सिंपल इसको ऐड जैसे करेंगे, इट इज कमिंग 270. So it is the final answer. The sum of all real value of k for which 1/8 to the power k into 1/3276 to the power 1/3 equal to 1/8 into 1/3276 to the power 1/k is. Okay. So here 1/8 to the power k and this 1/8 is equal to 13276 to the power 1/k over this 1/3276 to the power 1/3. So you can write it 1/8 minus 1, and this you can write 13276 to the power 1/k minus 1/k. Just 32768. Actually, it is 8 to the power 5. अगर आप इसे करके देखें तो it is 8 to the power 5. So
1/8 to the power k minus 1 is equal to 1/8 to the power 5 1 by k minus 1 upon. So it means it is k minus base same है तो power कंपेयर कर सकते हैं आप. This is 5 1 by k minus 1 upon, right? This k minus 1 5 3k and this is 3 minus k. इस सिंपल इसको आप सिंप्लीफाइड कर सकते हैं. k minus 1 into 3k and this is 5 3 is 15 minus 5k. This is 3k square minus 3k, this minus 5 plus 5k minus 15 is equal to 0. So 3k is square plus 2k minus 15 is equal to 0. आपको फाइंड करना है सम ऑफ द ऑल रियल वैल्यू ऑफ अ के. ओके, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई. इसका मतलब के जो रूट्स हैं, अब देखिए 3k² प्लस 2k माइनस 15, इफ यू अगर इसका आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं b² minus 4ac, तो b² is what? 2² minus 4a is 3 and c is minus 15. इट मीन्स जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी. तो b² minus 4ac is greater than 0 मीन्स रूट्स इसके रियल होंगे. रूट्स रियल होंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे यानी रूट्स का सम. ये आपका आंसर हो सकता है. तो इसका रूट का सम क्या होगा? तो पता ना अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए. तो रूट्स का सम यानी अगर इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है तो -2/3. तो के जो रूट्स होंगे उनका सम क्या होगा? -2/3. आंसर इज करेक्ट. सो गुड क्वेश्चन. कंसेप्चुअली इफ यू आर स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिस आपने ठीक से करी है, किया जा सकता था. Supposing x1, x2, x3, that is x100 are in arithmetic progression such that x5 is equal to -9 and 2x6 plus 2x9 is equal to x11 plus x13, then x100 is to be found out here. Look here, it was a very simple question based on formula Tn is equal to a plus n minus 1 into d. ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था. और ये nth टर्म्स का फार्मूला होता है जहां पर a फर्स्ट टर्म होता है और d कॉमन डिफरेंस होता है. राइट. सो लुक हियर, आपको x100 यानी 100 टर्म्स फाइंड करना है. x5 -4 दे रखा है तो इट इज -4 इज इक्वल a plus 4d. This is equation number 1. And from here to x6 means twice 6 टर्म हो गया a plus 5d and 9th term a plus 8d. This is equal to 11th term a plus 10d and a plus 12d. Here it is 2a plus 22d and here it is 2a plus d. So 2 से ये कॉमन 2 लेकर के कैंसिल हो जाएगा. It is a plus 11d and here it is 2a plus 13d. 2a minus a is a
and 13 minus 11 is b is equal to 0. It means third term is 0. So x3 is 0 here. X3 is 0 and x5 is given minus 4. So this is your equation number 2. Now इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी और d की वैल्यू मिल जाएगी, करेक्ट। और फिर आपको क्या फाइंड करना है, x100। ये 100 टर्म में क्या हो जाएगा, a प्लस 99 इंटू डी, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अ वन वे। लेकिन इसको आप गेस कर सकते हो, क्वेश्चन यही से खत्म हो गया। लुक हियर, x3 एंड x5 गिवन है, x5 इज -4 गिवन है, x3 आपने अभी निकालना है 0। तो आप x1 आप ऐसे निकाल सकते हो, 0 में -4 ऐड किया आपने, 5 आ गया। और दो टर्म्स के बीच में -4 का डिफरेंस हो रहा है, तो यहां पर भी -4 ऐड किया होगा तब 0 आया होगा। इसका मतलब x1 आपका 4 हो गया, है ना। दो टर्म्स में डिफरेंस 4 का डिफरेंस है, -4 का डिफरेंस है। तो एक टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आपका कॉमन डिफरेंस भी डायरेक्ट आ गया, -2। तो आपका फर्स्ट टर्म 4 हो गया, जिसे कि आप ए कहते हो। कॉमन डिफरेंस ये हो गया। तो विदाउट इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू कैन हैव value of a and t. So now answer is 4 plus 99 minus 2, 4 minus 198. Answer is -194. Okay, so it's simple formula based question. यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक से आप अमाउंट ऑफ जो कैलकुलेशन में टाइम है वो आप उस टाइम को बचा सकते हो। लेकिन वैसे भी ए और डी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप बहुत जल्दी ए डी की वैल्यू निकाल सकते हो। कोई वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, तो ये भी करने लायक था। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 11। In the xy plane, the area in square units of the region defined by the inequalities. One equality is y is greater than or equal to x plus 4, and here it is this x square plus y square plus 4x minus y greater than or equal to -4 and less than or equal to 0. So, mm, hmm, x-axis, y-axis कहते हैं। This is your y-axis and it's x-axis. पहले इसको लेते हैं, y is greater than or equal to x plus 4. So look, if it is y is equal to x plus 4, right? Then on putting x is equal to 0, y is 4. And on putting y is equal to 0, x is -4, right? And slope is 1, correct? So x is 0 and y is 4. X is 0, y is 4. Suppose it is 0 and y is 4. And y is 0, x is -4. Suppose this point is x is -4 and y is 0. So slope is 1. ये इस तरह की एक लाइन होगी, राइट।
It is y is greater than equal to x plus 4. सो इट मीन्स ये जो एरिया है आपका, ये है आपका, ये जो जाएगा, ये हो गया आपका पूरा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 4, राइट? Now take this inequality. It is x square plus y square plus 4 x minus y less than equal to 0. Okay. Like this minus 4 plus y square plus 4x minus 4y. X square 2 to the 4x, right? If I add here plus 4, and for this y square minus 4y here प्लस 4 इसके लिए ऐड कर दें, मीन्स अगर ये 88 हो जाए तो x प्लस 2 का स्क्वायर एंड y माइनस 2 का स्क्वायर 8, राइट? मीन्स 8 इधर ऐड की, इसको ऐसा समझ लें आप, 0 प्लस 8 और इधर भी ये प्लस 8 हो गया। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि ये आपका आ गया 4 x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, दिस इज y minus 2 square, and this is equal to 8. अब देखिए ये x प्लस 2 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर, यू नो, x प्लस h होल स्क्वायर y प्लस k होल स्क्वायर इज सर्कल की इक्वेशंस का ये है। तो जिन लोगों को ये पता है, ये सर्कल के इक्वेशंस है, राइट? h और k इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। So if I take x plus 2 square this and that, the h is minus 2 and y is plus 2. I'm taking this, right? X plus, I'm taking this x plus 2 square plus y minus 2 square equal to 4 ले रहा हूँ, राइट? तो a रेडियस क्या हो गया, 2, रेडियस 2 और एच के को कोऑर्डिनेट्स माइनस 2 2 हो गया, ठीक है? तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2, दिस इज एंड y, ये क्या आपका, ये आपका ये हो गया। तो ये इसका एक सेंटर हो गया और रेडियस इसकी 4 है, तो आपका एक सर्कल बनेगा। कुछ इस तरीके से। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, इट इज ओके, एक्चुअल में इट इज, आई एम टेकिंग राइट नाउ दिस इज इतना, सो इट इज नॉट इक्वल टू 4, इट इज ग्रेटर देन 4। तो एरिया कौन सा आया, इस सर्कल के बाहर वाला, ये सब, राइट? ये सब है इस सर्कल के बाहर जो भी आएगा, ठीक है? अब इसको लेते हैं। सो हियर
अगेन एक्स प्लस टू स्क्वायर वाई माइनस टू स्क्वायर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एट, इसको एट ले लेते हैं। एट इज व्हाट? एट को आप लिख सकते हो टू रूट टू स्क्वायर। सो दिस टाइम रेडियस इज टू रूट टू। तो सेंटर तो यही होगा, है ना? और रेडियस टू रूट टू हो गया। इसका मतलब आपका ये जो सर्कल बनेगा कुछ इस तरीके से। ऐसे जाएगा यहां से। करेक्ट। सेंटर सेम रहेगा। देखिए, यहां से यहां तक फोर है, यहां से तक फोर है। तो आपका ये जो हाइपोटेन्यूज है ये टू रूट टू ही होगा। करेक्ट है ना? इसलिए यहां से कट किया जाएगा। दिस टाइम एक्चुअली इट इज नॉट इक्वल टू दिस। ये इस तरह से है। अब जो एरिया होगा वो इस सर्कल के अंदर का होगा। सो सर्कल के अंदर ये चीज। So in the XY plane, the area in a square unit of the region defined by the inequalities means आपको जो फाइंड करना है वो रीजन है आपका हम्म, ये वाला। ये, इसको फाइंड करना है। करेक्ट। तो नाउ चीजें सारी क्लियर हो चुकी हैं। अब कोई देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक सेमी सर्कल हम लोग लेने हैं। इसका पूरे का एरिया कितना हो जाएगा? रेडियस तो आपको पता ही है। इसकी रेडियस है टू रूट टू। तो ये एरिया हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं बिगर सर्कल के का मैं सेमी सर्कल का एरिया निकाल रहा हूँ। मीन्स यहां से लेकर के ये पूरा, ये आपका आ जाएगा वन बाई टू पाई। आर है इसकी टू रूट टू स्क्वायर। अब इसमें से अगर आप ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्या होगा? माइनस वन बाई टू। और इसकी रेडियस कितनी थी? टू थी। माइनस पाई टू स्क्वायर। सो नाउ इट इज सिंपल। वन बाई टू, पाई को कॉमन लिया। टू रूट टू का स्क्वायर फोर टू एट, एंड हियर टू स्क्वायर इज फोर। एट माइनस फोर फोर, टू वन बाई टू पाई फोर टू। आंसर इज टू पाई। व्हाट मी एग्जाम में करने वाला क्वेश्चन नहीं था। जिनका कोर मैथमेटिक्स होगा, जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे और उन्होंने भी इसको रिवाइज वगैरह कर रखा होगा, टच में होंगे, तो ही कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे दूसरे ऐसे क्वेश्चन पड़े थे जो आपको करने चाहिए थे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में करना चाहिए। टाइम ट्रैप करता है और काफी कुछ समय भी लेगा। बट एनीवे, आफ्टर एग्जाम मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। आपको सोल्यूशन मिल गया, तरीका पता लग गया। इसका आंसर टू पाई है। आफ्टर रिस्पॉन्स इट आई एम
solve I'm solving all these questions. A difficult question, इतनी जल्दी समझ में आने वाला एग्जाम टाइम पे नहीं है, और अगर समझ में आ जाए तो फिर बात दूसरी है, बट रियली इट इज अ difficult question. Here, two set given है, set A and set B. Let f be a functions from A to B such that for every element B in B, set B का जो every element है, there is at least one element A in set A. यानी set B के जो elements हैं, ये set A के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज जरूर है, यानी वन भी किसी की इमेज है, कम से कम एक की इमेज जरूर है, आठ भी किसी न किसी की इमेज जरूर है, और 27 भी किसी न किसी की इमेज जरूर है। ठीक है। और ए जो सेट है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, इनकी इमेज भी सेट बी में प्रेजेंट है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेट बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। ठीक है ना। आप इस तरीके से समझे कि ये सेट बी के ईच एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है, जो आपकी फंक्शन इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, इसके किसी भी एलिमेंट की, मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबकी कोई ना कोई इमेज है जो इसमें प्रेजेंट है। तो हुआ ये, ऐसा नहीं हो सकता कि सेट ए के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो किसी, इसकी इमेज हो जाए, इसकी हो जाए, और ये किसी की इमेज ना हो। ठीक है ना। इस बात समझ में आई ना। यानी सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट्स की एक इमेज होगी, ऐसी फंक्शन होनी चाहिए। ठीक है। तो अब ये क्या हो सकता है, इसको ऐसे समझिए कि जैसे वन है, सेट ए के किसी एक एलिमेंट की इमेज हो, और एट किसी, जब एक के बचे हुए जो पांच हैं उनमें से किसी एक की इमेज आठ हो। अब जो चार बचे, उन चारों की इमेज क्या होनी चाहिए, हो सकता है एक दो तीन चार पांच छह। अब सेट बी के हर एलिमेंट को आप देखिए, हर एलिमेंट किसी न किसी सेट ए के एलिमेंट की एक इमेज है। आपकी फंक्शन इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है ना। यह ऐसा हो जाए कि सेट बी का एलिमेंट वन सेट ए के किसी एक एलिमेंट की इमेज हो, और एट किसी दो एलिमेंट की इमेज हो। अब एक दो तीन हो गए, बाकी के बचे हुए तीन एलिमेंट जो सेट ए के हैं, वो उन तीनों की तीनों की इमेज 27 है। या फिर ऐसा हो जाए कि सेट बी का एलिमेंट जो वन है, ये सेट ए के दो एलिमेंट्स की इमेज है, और एट जो है ये भी बचे हुए जो चार है उनमें से किसी दो की इमेज आठ है, और बचे हुए दो जो से एलिमेंट्स हैं सेट ए के, उनकी इमेज 27। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6, राइट, सब बिजी हो गए। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे ये तीन लेटर बॉक्सेस है, और आपके पास छह लेटर्स है, देर आर 6 लेटर्स। ईच लेटर बॉक्स में कम से कम एक लेटर आपको जरूर डिस्पैच कर, तो आप एक इसमें डाल दें, एक इसमें डाल दें, चार इसमें डाल दें, या एक इसमें डिस्पैच कर दीजिए, दो इसमें कर दीजिए, तीन इसमें कर दीजिए, या दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें। करेक्ट। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब ये देखो, ये वाला केस लेते हैं। ठीक। कि सेट बी का जो एलिमेंट है आपका, ये वन, सेट ए के किसी एक एलिमेंट की इमेज है। अब सेट ए के किसी एक एलिमेंट की इमेज है। अच्छा, आपको क्या निकल रहा था, टोटल नंबर ऑफ सच फंक्शन। तो सपोज इसमें से कोई एक एलिमेंट छटा जाए,
तो अगर एक एलिमेंट सेलेक्ट करोगे तो आउट ऑफ सिक्स, सिक्स C1, ठीक है, उसकी इमेज ये हो गई। 6 तरीके से, 6C1 6, इसमें से टू हो सकता है, टू की इमेज वन हो सकती है, थ्री की हो सकती है, फाइव की हो सकती है, सेवन की हो सकती है, 11 की हो सकती है, 13 की हो सकती है, फंक्शन पे डिपेंड करेगा, राइट। ठीक है। अब आउट ऑफ सिक्स वन की इमेज वन हो गई, ये हमने केस लिया। ये भी किसी एक के, तो बचे हुए पांच जो है उनमें से कोई एक 5C1 तरीके से आप चूज कर सकते हो, उसकी इमेज 8 हो गई। ठीक है। अब बचे कितने, दो निकल गए, चार बचे आउट ऑफ सिक्स। फोर एलिमेंट सेट एक ऐसे हैं उनकी इमेज 27 है, तो फोर में से फोर आप सेलेक्ट कर सकते हो, 4C4 तरीके से, राइट। ये हो गया। यहां पर एक बात ध्यान रखो, ये मैंने एक केस आपको लिया था कि 1827, बट ये अरेंज ऐसे भी हो सकता है ना कि ये एक, ये किसी एक की इमेज, और आठ किसी चार लोग की इमेज है, और 27 एक की इमेज है, या फिर 27 जो यहाँ पर फर्स्ट केस में मैंने चार लोगों की इमेज है, पहला है ये एक के चार एलिमेंट्स की इमेज, ये वन है वन। ये अरेंजमेंट क्या हो सकता है, तो 1144, यानी ये एक के लिए, ये एक के लिए, और ये चार के लिए, राइट। तो इस बॉक्स को, इस ये है कितने, एक दो तीन, तीन नंबर है 183, इनको यहाँ पर आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल थ्री तरीके से, राइट। लेकिन दो वन वन वाले होंगे तो आपको पता है ना, अगर आप वन वन ऐसे लिखते हो, या ये वाला वन इधर लिख दो, ये वाला वन, तो उसको अलग थोड़ा हो गया रहेगा, तो सेम अरेंजमेंट, इसलिए यहाँ पर इसको ऐसे कर दो। ये सब आपने अगर बेसिक क्लासेस ली हैं तो आपको पता होगा, राइट। दूसरा क्या हो सकता है केस, दूसरे केस में ठीक इसी तरीके से आप ले लीजिए ये वाला केस। सो आउट ऑफ सिक्स C1, बचे हुए पांच में से 5C2, और फिर बचे हुए तीन में से 3C3। अब यहां पर क्या है, किसी एक की इमेज ये है, कि किसी दो की इमेज है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है, एक में एक की इमेज, दो की इमेज, तीन की इमेज, तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो सिंपली फैक्टोरियल थ्री होगा। तीसरा जो आपका केस है, यहाँ पर दो दो दो, राइट, तो ये जो नंबर है आपके एक दो तीन, 6C2, 4C2 एंड 2C2, यहां पर क्या हुआ, आपके पास एक दो तीन थे, राइट। और तो इसका आपका अरेंजमेंट किस तरीके से हो जाएगा, एक ही तरीके से, फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल ओनली वन वे, करेक्ट। तो अब इसको आप ऐड कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, इसी को ऐड कर देना है। तो व्हाट इज इट, इट इज 6C1 मीन सिक्स, 5C1 5, 4C4 this, and it is 3, ठीक है। देन 6C1 is 6, एंड दिस 5C2 is, आप सॉल्व कर लीजिए, 10 आएगा, 3C3 1 हो जाएगा, एंड दिस फैक्टोरियल 3 is 6, एंड 6C2 is, आप सॉल्व करिएगा पूरा, तो ये आएगा 15, 4C2 को सॉल्व करिएगा, ये आएगा 6, और देन इट इज 1, एंड फैक्टोरियल, यहाँ पर सॉरी, फैक्टोरियल 3, 2 2 2, अलग अलग केस तो नहीं होंगे, ठीक है, वन में होगा। So this is 6 5 जा 33 जा 90, 6 6 जा 36, 10 जा 360, and this is 90, इसको ऐड कर दे, 9 9 83 6, it is 540, this is your answer।
सो इस क्वेश्चन को, ये पीएनसी का क्वेश्चन था, राइट। और फंक्शन का ये जो कंसेप्ट है इसको समझने की जरूरत थी। रियली इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना आसान नहीं है। समझ में अगर आ जाए, आपने अच्छी से प्रैक्टिस कर रखी है, कंसेप्ट आप क्लियर है, तो ये आप इसको देख सकते हैं, बट इट वॉज नॉट ए इजी क्वेश्चन। एग्जाम टाइम में इसे भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। एनीवे, टू द पावर 100 is divided by 7, find the remainder. So 10 to the power 100 divided by 7, finding remainder here means, see, when you divide 10 by 7, the remainder is 3. So actually the question is, 3 to the power 100 is divided by 7, what is the remainder, right? So now see the behavior of 7 when you divide 3 by 7. सो 3 to the power 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 रहेगा। 3 to the power 2 मीन्स 9 को डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर 2 आएगा। 3 to the power 3 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 28, इट इज 27 मीन्स रिमाइंडर -1 हो जाएगा, और 1 के बाद साइक्लिसिटी मिल जाएगी। इट मीन्स 3 to the power 100 को हम लोग 3 के टर्म्स में लिखते हैं, 3 into 33 + 1, राइट। एंड नाउ 7, 3 to the power 3 to the power 33 into 3 to the power 1 divided by 7. So 3 to the power 3, 3 to the power 3 divided by 7, remainder -1, and -1 to the power 33 into 3 upon 7. And now you know -1 to the power odd number means -1. So -1 into 3 by 7, when you divide, the remainder will be -3. So when you're dividing it by 7, remainder is coming -3, means remainder is +4. There are four numbers such that average of the first two number is one more than the first number. Average of the first three number is two more than average of the first two numbers. And the average of the first four number is three more than average of the first three numbers. Then difference between the largest and the smallest number is. Again, I would like to say it is a very, very doable question. और सिटर कह सकते हो या ब्लेसिंग कह सकते हो, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको टेस्ट में मिलते हैं और आपने प्रिपेयर किया है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट कर सकते थे। देखिए, सपोज देर आर फोर नंबर A, B, C, D, गिवन है कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू नंबर इज वन मोर देन एवरेज ऑफ द फर्स्ट नंबर। सो ए को अगर हम लोग 1 ले लें, एज्यूम कर लिया A इज इक्वल टू 1, तो ए और बी का एवरेज क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, है ना। अगर ए और बी का एवरेज 2 है तो इनका सम क्या होगा? 2 2 4। तो अगर ए 1 है तो इसका मतलब बी को 3 होना चाहिए, ठीक। देन एवरेज ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर इज 2 मोर देन एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू। फर्स्ट टू का एवरेज 2 था, इसका मतलब फर्स्ट थ्री नंबर का एवरेज क्या होगा? 2 मोर देन मीन्स एवरेज 4 होगा। अब फर्स्ट थ्री नंबर का अगर एवरेज 4 है तो फर्स्ट थ्री नंबर का सम 4 जा 12 होना चाहिए। तो 1 + 3 4, सी को 8 होना चाहिए। देन एवरेज ऑफ द फर्स्ट फोर नंबर इज 3 मोर देन एवरेज ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर। फर्स्ट थ्री नंबर का एवरेज में 4 निकाला है, तो इसका मतलब फर्स्ट फोर नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा? 3 मोर यानी 4 + 3 7 होगा। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एवरेज अगर 7 है तो इनका सम क्या होगा? 7 4 जा 28। सो लुक हियर, 1 + 3 4, 4 और 8 12, so it should be 16, राइट। खत्म हो गया क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट and the smallest, 16 minus 1, answer is 50. The sum of all four-digit numbers that can be formed with the distinct non-zero digits A, B, C, and D, with each digit appearing exactly once in every number, is 153310 plus n. Where n is a single-digit natural number, then the value of A plus B plus C plus D plus n, right?
Okay. So here, actually, it is a number of 4 digits, and this number is formed by using digit A, B, C, and D. A, B, C, D are non-zero digits. And in each number, repetition of digit is not allowed. Digit appearing exactly once in every number, right? So the sum of these sort of numbers is 153310 plus n. And n is a single digit natural number. Okay. So it's a 4 digit number by using digit like A, B, C, D. Okay. So as such, how many numbers are there? Very simple. Like it is a 4 digit number. So one, two, three, four. Total numbers of 4 digits will be fractal 4 means 24. Like this place you can use by A or B or C or D is by 4-way. And this after using any one of Z, 3 are left with you. Then this can be filled by 3-way. This 2 into 1, 24, right? So this way there are 24 numbers. Okay. Look here. Suppose a number which start with A. A is fixed. Then these 3 digits, this digit you can fill by 3 ways, right? And 2 and 1. It means if a number is starting with the A, then there are 6 numbers starting with A, right? Like A, B, C, D, A, C, B, D, A, D, C, B. इस तरीके से there are 6 numbers. We'll start with A. Similarly, if I take B here, then again 6 number, with C 6, with D 6. Okay, so these are 24 numbers. Now you can notice one thing. You have to find actually the sum of all these 24 numbers. Right? Like A 6, B 6 times, C 6 times, D 6 times. So in each column is like 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ऐसे आप ये नंबर तो इस कॉलम में या 4 कॉलम्स होंगे आपके नंबर्स के in each column. A will repeat 6 times, B will repeat 6 times, C will repeat 6 times, D will repeat 6 times. Means sum of it 6 A plus B plus C plus D. Similarly here 6A plus B plus C plus D, 6A plus B plus C plus D, 6 correct. Some so here it is a unit place, it is a tens, it is a hundred, it is a thousand. Right. So you can take 6A plus B plus C plus D, and then it is thousand, hundred, tens and unit. Right? इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा ये होगा. And this, it is 6A plus B plus C plus D. And here 1,110 is this is 1,101. Correct. So sum of the 24 numbers will be in this shape, means 6,666 into A plus B plus C plus D, right? And this sum is actually given equal to 1533
3310 plus n. So look here, the left hand side is this double six double six into a plus b plus c plus d. So right hand side 153310 plus n. करेक्ट. इसका मतलब राइट हैंड साइड जो नंबर होगा ये डबल सिक्स से डिविजिबल होगा. इज इट राइट? दिस नंबर 1,53,310 plus n will definitely be divisible by double six double six. Okay. Now see, it is given n is a single digit natural numbers. So single digit natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीन्स मैक्सिमम अगर n की वैल्यू होगी तो वो 9 हो सकती है. तो बस इसी का हम लोग हेल्प ले लेते हैं कि 153319 ले लेते हैं. 153319 और इसको हम लोग डबल सिक्स से डिवाइड करके देखते हैं. सो फर्स्ट 2 6 12, 2 6 12 113, 2 6 12 113, 2 6 12 113. Okay. 11 minus 2 is a 9. 12 minus 3 is 9. 12 minus 3 is 9. And now here 4 minus 3 is 1. Now take this 9 here and again divide. If I divide it by 2, then 13,000 something. Let us do it, check it with 3. 3 6 ja 18. 3 6 ja 18, 119. 3 6 ja 18, 119. 3 6 ja 18, 119. What is it? Okay, remainder is 1. It means 153319 minus 1. I mean 153318 is completely divisible by double six double six. Is it okay? So here it is 153310 plus n. It means this number is written here as 153310 plus 8. Got me? And this is double six into this 23. So now it is clear that a plus, you have to find a plus b plus c plus d plus n. I mean a plus b plus c plus d plus n. So a plus b plus c plus d, it is 23 प्लस n की जगह ये क्या हो गया? a. 23 plus 8, 31 is your answer. It was a very good question. It was a very good question. अगर आपने अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करी होगी और चीजें क्लिक कर जाती है तो एक बार क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो किया जा सकता है. बट रेटिंग इज रियली, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ABCD is a rectangle with sides AB 56 centimeter, BC is 45 centimeter, E is the midpoint of side CD, then the length in centimeter of radius of the circle of triangle ADE. Okay, diagram बनाते हैं. तो this is a rectangle A, B, C and D. AB is 56 centimeter and BC is 45 centimeter. E is the midpoint of CD. Okay, it is. E is a midpoint. So it is a median A,
डी सी पे एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। अब ये ट्रायंगल बन गया आपका, ट्रायंगल एडीई। तो दिस इज द ट्रायंगल एडीई। इनसाइड दिस ट्रायंगल देयर इज अ सर्कल। सो लेट अस टेक दिस, ये एक सर्कल हो गया। इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो सर्कल का जो रेडियस फाइंड करना है आपको, हम्म, तो देखिए सिंपल सी बात है, ट्रायंगल ए डी ई का ये इन सर्कल है, तो इसकी रेडियस स्मॉल आ रहा है। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, ट्रायंगल के अंदर जो इन सर्कल होता है उसकी रेडियस का फार्मूला आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन स्मॉल एस। डेल्टा इज ए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड स्मॉल एस इज ए सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ओके, तो पहले हम लोग डेल्टा फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, सो इट इज वेरी सिंपल, 1/2। बेस की जगह हम लोग ले लेते हैं डीई। तो हाइट इसकी एडी हो जाएगी 1/2। डी इज 56, मिड पॉइंट था तो ये 28 हो जाएगा। एडी इज रेक्टेंगल है तो ये 45 है, ये भी 45 होगा। ये आपका एरिया आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। स्मॉल एस कैसे निकलेगा? यू नो स्मॉल एस इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। सो हियर in this triangle ADE, it is a D, it is a E, it is a A, ये 28 गिवन है, और इसको आप 45 ले लोगे, ये 90 होता है। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम लोग ए फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज ए? ए इज 45 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर। 45 स्क्वायर आपको निकलना आता होगा 2025। 28 अप टू 30 आपने लर्न कर रखे थे, 784। इसको ऐड करिए, सो 549, 8 2 10 and 718 2809 एंड 2809 53 का स्क्वायर है। कैलकुलेटर आपके पास है ही है, वैसे ये सब लर्न होने चाहिए, वही मुझे तो लर्न है। इट इज 53। अब ए आपका 53 हो गया, तो नाउ एस इज वेरी सिंपल। ए इज 45 प्लस 28 एंड दिस यू कैलकुलेटेड 53 बाई 2। सो 5 8 13 3 16, 4 2 6 5 11 12 divided by 2. It is coming 6 3. So now I think very simple. Simply plug in here to get R. Small r is, ये कितना था, 14 into 15, 45, 14 into 45 and small as you calculated 63. So 7 2 ja, 7 9 ja, 9 5 ja, R is equal to 10. The surface area of a closed rectangular box which is inscribed in a sphere is 846 square centimeter. And the sum of the length of all its edges is 144 centimeter. The volume in cubic centimeter of the sphere. So you can see it is a sphere, and inside this rectangular A, B, C, D, E, F, G, and this is H. It is a rectangular box inside the sphere.
Surface area is given 846 square centimeter. So rectangular box का surface area फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए. If length is L, BH, surface area is twice L, B, BH, HL. This is given 846. Okay. Then sum of the length of its all edges. So, in rectangular box, there are 12 edges, 4L, 4B, 4H. So 4L plus B plus H is equal to 144. This is 36. So L plus B plus H, 36 centimeter. And this is equation number 1. Surface area was given. Okay. Now, the volume of the cubic centimeter of the sphere. Sphere का volume formula again, V is equal to 4 pi P pi R cube. So R फाइंड करना है. तो R क्या होगा? इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो डायगोनल होगा वो इस स्फीयर का रेडियस होगा, डायमीटर होगा. So A is AF is AF is a diagonal of this rectangular box, so which is a diameter of a sphere. So it is a 2R is equal to AF. And again, AF is what? It is root of L square plus B square plus H square. So here, for finding the volume, the formula is V is equal to 4 by 3 pi R cube. Means R की वैल्यू चाहिए और R L B इसके टर्म्स में कैसे? तो सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशंस बन गई हैं एक तरीके से. आप निकालें L प्लस B प्लस H स्क्वायर फार्मूला पेस्ट है. L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ट्वाइस L B B H H L. This is given 36 square, and this is L square plus B square plus H square plus 2 LBBH. It was 846. So this 36 square minus 846. 36 square is 1296 minus 846 is equal to L square plus B square plus H square. 660945. It is 450. So here it is 2R is equal to root 450. 450 I can take as a 900 by 2. So 900 by 2R. So 2R is 30 upon root 2. R की वैल्यू आपको फाइंड हो गई. यूज इन फार्मूला. B is 4 by 3 pi. R is R, यहां से आप ऐसा लिख सकते हो. R is 15 upon root. So 15 upon root 2 whole cube. So V is 4 by 3 pi 15 15 15 upon root 2 root 2 root 2. So एक रूट 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे.
तो ये √2 √2 2 √2 2 4, तो ये क्या, और 3 5 से 15 15 225 225 into 5 11 25. This is pi and this is √2. It means answer is 1125 pi √2. So it was a question of mensuration. As you draw this figure or a little practice in advance from your practice days can help you a lot. करा जा सकता है अगर आपने इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लिया. The surface equation x square plus mx plus 9 is equal to 0, x square plus nx plus 17 is equal to 0, and x square plus m plus nx plus 35 is equal to 0 have a common negative root. Then the value of 2m plus 3n is 8. So that alpha is a common root. Alpha is a common root. So alpha will satisfy all these three given equations. Let us take this first one, x is square plus mx. mx plus 9 is equal to 0. Look here, if one root alpha is here and second root, suppose I take beta 1. So it means the product and sum you can find out alpha plus beta 1 is equal to minus m. And alpha into beta 1 is here 9 upon 1. Right? So from this, beta 1 is 9 upon alpha. So one root is alpha and other root is 9 by alpha. It means alpha plus 9 by alpha is equal to minus m. Hmm. In same pattern, I can find out if alpha is one of the root of x is square plus nx plus 17 is equal to 0. So one root is alpha, which is common. The second is going to be 17 upon alpha, as I find here. So here alpha plus 17 upon alpha is equal to minus n. Got me? And on the same pattern, here, this equation is x square plus m plus n x plus 35. So one root alpha is common. So on the same pattern, second root will be 35 upon alpha. Correct. So now alpha plus 35 upon alpha means sum of the root is going to minus m plus n. Correct? Now you can work faster. Mm. It is n, it is m plus n. So do one thing. M is minus alpha minus 9 by alpha, and n is minus alpha minus 17 by alpha, right? Minus alpha minus 17 by alpha. So this is what it is, m plus n. From here it is m plus n. You can take huh? M plus n is what? This is going to minus
alpha plus 35 by alpha. So when you take minus common, right, माइनस यहाँ ले लीजिए, प्लस प्लस, इसका भी माइनस यहाँ ले लीजिए, प्लस प्लस, और ये भी माइनस माइनस, ये सब प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखा अल्फा, इस अल्फा को इससे हटा दीजिए, अल्फा प्लस 9 by alpha, 17 by alpha means 26 by alpha, and here 35 by alpha means alpha is equal to 35, 26, 9 by alpha. It is alpha square is equal to 9. Alpha is equal to plus minus 3. A common negative root. So alpha you will take is equal to minus 3. Alpha is equal to minus 3. So put here for getting m and put here for getting n. Minus 3 plus 9 upon minus 3 is equal to minus m. So minus minus cancel. So m is equal to 6. And here put value of alpha. So again here minus 3 plus 17 upon minus 3 is equal to minus and minus minus cancel हो जाएगा, 3 3 9, 26 by 3 is n. तो आपको n मिल गया, ये आपको n मिल गया, and what you have to do, you have to find 2m plus 3n. So I think easy हो गया, twice into m की जगह 6 लिखे plus 3, n की जगह 26 by 3 cancel, 12 plus 26, 38 is your answer. Okay, question now this question number 19. Renu would take 15 days working 4 hours per day to complete a certain task, whereas Seema would take 8 days working 5 hours per day to complete the same task. Okay. They decide to work together to complete this task, same task they want to do together. Seema agreed to work for double the number of hours per day as Renu. Okay. And Renu agreed to work for double the number of days as Seema. If Renu works 2 hours per day, it is given, then the number of days Seema will work. Okay. So look here, in this question, when Renu work 15 days, working 4 hours daily, then she finishes the whole work. Means Renu finished the whole work in 15 into 4 means 60 hours. 4 hours daily for 15 days. So Renu finished the work in 16 hours. And Seema finished the same work in 8 days, working 5 hours daily, it is in 40 hours. Okay. So Renu takes 60 hours to finish the work and Seema takes 40 hours to finish the work. It means Seema work is faster than Renu. Let us take the whole work, means full work is, suppose it is 120 work. If the whole work is 120 and Renu finishes it in 60 hours, means every hour Renu works 2W and Seema in 40 hours. So every hour Seema will finish 3 work. Okay. And now it is given they decided to work together. Working together condition is Seema decided to work double the number of hours per day as Renu. और ये given था कि Renu works 2 hours. So Renu
is working here for 2 hours, so Seema will work daily 4 hours. है And it was given that Renu agreed to work for double the number of days as Seema. So if Seema daily work for 4 hours for Y days, Renu will work for 2Y days. Okay. So now the whole work is 120. Here, 4 into in Y days, Seema will work 4Y hours. And every hour, the contribution of Seema is 3 works, so 4 by 2, 3W. Renu, 2 hours for 2Y days, so total hours 4Y. And every hour, 2 works, so in 4Y, this should be equal to 120. 120 work. So now this W cancel. And this 4 3s are 12Y. And here 4 2s are 8Y. 120. 20Y is equal to 120. So Y is 6. Y days means Seema will finish in 6 days. Seema will finish the work in 6 days. This is your answer. Now see the next question. If x is a positive real number such that 4 log of x base 10 plus 4 into log of x base 100 plus 8 into log of x base 1000 is equal to 30, then the greater integer not exceeding x. Okay. So look here, it's 4 log of x base 10, and this is 4 log of x base 100, and here 8 into log of x base 1000 is equal to 13. It is a 10, it is a 100, it is 1000. Okay, 4 log of x base 10, and you can take it 10 to the power 2 means 4 by 2 log of x base 10, and here this 10 to the power 3, so 8 by 3 log of x base 10 is equal to 13. So this is 2, 8 by 3, and this, okay, you can take it log of x to the power 4 base 10 log of x to the power 2 base 10, and here log of x to the power 8 by 3 base 10 is equal to 13, and now base same है, so formula apply हो गया. This is log x4 x square x to the power 8 by 3 is 13, means x to the power 4 plus 2 6, 6 plus 8 by 3 is equal to 13. 3 6 is 18, 18 8 26, 26 by 3 is 26 by 3 log of x base 10 is equal to 13. 13 1 ja, 13 2 ja. So this is log of x base 10 is equal to 3 by 2. Okay, x की value find करनी. So here it is x is equal to 10 to the power 3 by 2. Now, x is a positive real number, not exceeding. Then find the greatest integer, not exceeding x. Okay, you can take x 10 to the power 3 means 1000 to the power 1 by 3.
Look here, यार. Sorry, 1,000. X is equal to 1,000 to the power 100. See, 30 is square is 900, right? And 31 is square is a 961, है ना? So, what is it? 30 point something, correct? 31 is 96, sorry, 31 is 961, so it is 930. It is X is equal to 31 point something something होगा. So question is X. The greatest integer not exceeding X. So integer is what? X. Answer is 31. It is clear. X is equal to 1,000 to the power 10, right? So you know 1,030 square 900 होता है, and 31 स्क्वायर 961 होता है. 32 होता है 1024. Definitely X is going to be 31 point something something. So the greatest integer not exceeding X is 31. This is your answer. Now this question number 21. Let X, Y and Z be real numbers satisfying 4x square plus y square plus z square a, 4x minus y minus z is equal to 3 plus a, then a is equal to. इट वॉज अ रियल टाइम ट्रैकर. कभी भी एग्जाम में इसको नहीं करना. जिन लोगों ने भी किया होगा मेरे ख्याल अच्छा खासा टाइम लग गया होगा और शायद उसके बाद भी फिर सिर दर्द ही हुआ होगा. ऐसे क्वेश्चन, एक्स वाई जेड तीन अननोन वेरिएबल्स हैं, फिर ए बी और ए की वैल्यू निकालनी है, इतनी जल्दी स्ट्राइक नहीं करेगा. तो एग्जाम खत्म हो जाने के बाद रिस्पॉन्स शीट वगैरह आ गई है वगैरह, फिर इसको बाहर एग्जाम के बाद करने वाला क्वेश्चन है, और काफी माथापच्ची करने के बाद कुछ. तो इट वॉज अ रियल टाइम ट्रैवलर इन स्लॉट 1. क्वेश्चन करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. तो दिस 4x² प्लस 4y² प्लस 4z² माइनस ये पूरा का पूरा सिस्टम x माइनस वाई माइनस जेड, और ऐसे ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, इधर आ गया -3. देखिए 4x² ये है, ये -4x है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि 4x² -4x, ठीक. और फिर ये 4y² माइनस माइनस प्लस, तो ये 4y हो गया. एंड दिस 4z² माइनस माइनस प्लस, इट इज अ 4z. और इसको आप ऐसे ले लीजिए, राइट. अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x² राइट. तो -4x को एडजस्ट करिए, 2 × 2x है ना, तो ये -4x हो गया. अब इसमें +1 अगर ऐड कर दें और -1 कर दें तो आपको ये एक 2x - 1 का होल स्क्वायर बन गया, राइट. इसी तरीके से इस 4y² को आप लिख सकते हो 2y² प्लस 2 × 2y, और इसमें भी +1 कर दें तो यहां पर भी -1 आ जाएगा. और ठीक इसी तरीके से यहां पर 2z² प्लस 2 × 2z +1, और ये -1 बाहर तो ये +3. तो देखिए ये -1, ये -2 और ये -3 +3, ये तो निपट गया.
अब यहां हो गया 2x-1 का स्क्वायर, 2y-1 का स्क्वायर, टू नहीं 2y+1 का स्क्वायर एंड 2z+1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब किसी का होल स्क्वायर कर रहे हो तो ये तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इज इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है? तो ये सोचा जा सकता है कि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तभी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 0। तो इस सिनेरियो में जब when 2x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2 एंड 2y+1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1/2 और हियर 2z+1, तो z इज इक्वल टू -1/2। और फिर इसको इसमें रख देते हैं, वैल्यू प्लग इन कर दीजिए। 4x 1/2 माइनस वाई है और y आपका -½ निकला है, तो ये +1/2 हो जाएगा। इस मिस्टेक तो नहीं रही? 2x+1 का होल स्क्वायर, x is 1/2, y is this। क्वेश्चन नंबर 1 में रखो, हम खा 8+3 फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो a की वैल्यू चाहिए, सो पुट इन दिस इक्वेशन। सो 4a is, this is 1/4, y square is also 1/4 and z is also 1/4 is equal to a 4 into 3/4। ये आपका a is equal to 3 आ गया, करेक्ट। बहुत माथापच्ची करने के बाद ये कुछ मतलब ये एग्जाम में नहीं निकला, नहीं निकलते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही किसी को क्लिक कर गया तो बात एक अलग है, लेकिन इट वाज अ रियल टाइम ट्रैकर। नंबर 22। Two places A and B are 45 kilometers apart and connected by a straight route. Anil goes from A to B while Sunil goes from B to A, starting at the same time. They cross each other in exactly 1 hour 30 minutes. If Anil reaches B exactly 1 hour 15 minutes after Sunil reaches A, the speed of Anil in kmph, kilometer per hour, is okay. Suppose this is a distance AB, 45 kilometer apart. Anil start from here, going A to B, and Sunil goes from B to A. Sunil is starting from here, this way. Starting at the same time, both of them starting at the same times. They cross each other in exactly 1 hour 30 minutes. Okay. 1 hour 30 minutes means after 90 minutes they meet. So suppose after 90 minutes they meet at this place. See, right? And suppose x, it is x. Then this is 45 minus x. No problem, because distance between A and B is 45. So if I consider this distance is x, then this is 45 minus x. Okay. Now, if Anil reaches B exactly 1 hour 15 minutes after Sunil reaches A, सुनील जब यहां पर पहुंच जाता है उसके 1 आवर 15 की 75 मिनट्स के बाद
ये यहां पर पहुंचता है। ठीक है, तो अब देखा जाए अनिल ने इस 45 - x मिनट, अनिल को ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? टाइम टेकन बाय अनिल फ्रॉम ए टू बी, इट इज 90 मिनट प्लस remaining distance is x. And suppose the speed of Anil is a kilometer per hour and speed of Sunil is small s kilometer per hour. A for Anil, S for Sunil, it will help you. X upon small a. This is the time taken by Mr. Anil to reach B from A. Okay, let us take time T2 to reach B to A by Sunil. तो 90 मिनट पहले सुनील ने भी चला और फिर इसके बाद इन्होंने इस 45 - x किलोमीटर डिस्टेंस को अपनी स्पीड से, सपोज इनकी स्पीड एस है, इससे चला। अब इट वाज गिवन अनिल रीचेस 1 hour 15 minutes आफ्टर सुनील रीचेस बी। इसका मतलब अनिल ने ज्यादा टाइम लिया। तो ये डिफरेंस क्या हुआ? ये डिफरेंस हुआ T1 - T2 is 75 minute. And T1 is your 90 minutes plus x by a, and here it is 90 minutes plus 45 by x. This is equal to 75 minutes. तो देखिए ये 90 और ये 90 तो कैंसिल हो गया। अब ये आ गया x अपॉन a माइनस 45 माइनस x upon smallest, and this is 75 minute. Point is to be noted, अनिल की स्पीड क्या होगी? ए आप कैसे फाइंड कर सकते हो? ए को हम लोग ऐसे ले लें, ए को इस अनिल, ये डिस्टेंस 45 माइनस एक्स है ना, ये यहां से 90 मिनट के बाद पहुंचा था, तो अनिल की डिस्टेंस आप ले सकते हो 45 माइनस एक्स किलोमीटर को ट्रेवल करने में 90 मिनट। एंड सुनील ने क्या किया था, इस 90 मिनट के बाद वो एक्स किलोमीटर चल के यहाँ पर पहुंचा था। ठीक है ना? सो एक्स अपॉन 90 मिनट इसका आ गया। तो अब हम लोग ए और एस को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा ए इज एक्स अपॉन 45 माइनस एक्स बाई 90 मिनट माइनस दिस 45 माइनस एक्स अपॉन स्मॉल एस की जगह एक्स बाई 90 मिनट्स। ठीक, मिनट मिनट चल रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू 75 मिनट, इसलिए कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस इज राइट, इसको अगर ऐसे लिख लें, एक्स 90 मिनट और ये हो गया आपका एक्स अपॉन 45 माइनस एक्स माइनस 45 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और ये 90 मिनट यहां पर भी है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक, ये 90 ऊपर दोनों में आएगा, इज इक्वल टू 75 मिनट का। सो 15 5 जा 6 जा, तो ये आ गया आपका 5/6। अच्छा ये देखो, x अपॉन 45 - x है, ये 45 - x। तो अगर हम लोग जल्दी करने के लिए x अपॉन 45 - x को मतलब कुछ y ले लेते हैं, राइट? सपोज दिस इज इक्वल टू y, तो ये क्या लिखा हुआ है? y - 1/y।
वाई माइनस वाई, 1/y इज 1/6। तो आप समझ सकते हो y की वैल्यू कितनी हो गई, 6। 6 - 1/6। ये नहीं 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 नहीं, इसको मैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हो जाएगा, हम्म, ये हो जाएगा आपका 3/2, राइट। 3/2, 5/6 है। वैसे तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, लेकिन अगर आप y की वैल्यू 3/2 ले लो, 3/2 क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 3/2, 5/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये मतलब अगर आपने प्रैक्टिस वगैरह करी है तो आप समझ सकते हो। तो यहां से y आ जाएगा 3/2, राइट। अब आप चाहो तो y को सॉल्व कर लीजिएगा क्वाड्रेटिक की तरीके से, अदरवाइज y इज इक्वल टू 3/2 आएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप प्रैक्टिस करते करते आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो y इज 3/2 एंड x आपने लिया था 45 माइनस x को y लिया था, दिस इज इक्वल टू 3/2। सो दिस इज 2x, 3 इंटू 45 माइनस 3x, 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 55, 5 9 जा 45। सो x आ गया आपका 27, x आ गया 27। ये डिस्टेंस 27 थी, ये कितनी होगी 45 माइनस एक्स। और आपको निकालना था स्पीड अनिल की। अनिल की स्पीड क्या थी, 45 माइनस एक्स अपॉन 90। सो स्पीड अनिल की 45, एक्स आपने अभी 27 निकाला है, और दिस इज इक्वल टू 90 मिनट है। 90 मिनट को अब आप चेंज कर दीजिए, 1/60 कर देंगे, किलोमीटर पावर, 45 माइनस 27 इज 18। 18, 2/3, 6 to 12। So speed of an is 12, 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। यहाँ पर y माइनस 1/y को आप सॉल्व करके भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हो तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता रहता है कैलकुलेशन, इट इज y इज इक्वल टू 3/2, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। ये केवल प्रैक्टिस से है, बाकी चाहो तो y निकाल सकते हो पॉलिटिक्स में। तो ये जो मैंने y इज इक्वल टू 3/2 निकाला, ये प्रैक्टिस है, और बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, सोचा जा सकता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12 किलोमीटर पर आवर।